Hello, I welcome to all of you on Unacademy this platform. This is Kumar Mayank, and now we are going to discuss Indian economy as marathon and MCQs basis. Now, क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है और मैं कुमार मयंक आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, there are huge and best educators for UPSC CSE. All of you can crack it. Then this platform is Let's Crack It. Now, one subscription to crack it all 25 plus 10% is now off, 35% exactly off. There is huge offers and there is ultimate test series combo also available at the test every year. 50 prelims test, 20, 12 and 18. It means full length test will be 20, 12 sectional test, 18 topic wise test and 30 mains test. UPSC CSC 6 in 1 offer. Price hiking coming soon and nobody knows how much price hiking will be going to increase. Unacademy notes 10,000 mega subscription offers. Chase your dream loans for UPSC subscription. You can use my code and my code is K10. Yes, all of you can use my code. My code is K10. This is K10 code you can use and CSE assure on 2 years and above subscription offer, and offer is going to end very soon in this month. Now you can use iconic subscription and plus subscription. Personal guidance, get one-to-one guidance from top exam experts, live classes, weekly test, study planner, customized study plan with bi-weekly reviews. Structured courses are also available. Unlimited access, test analysis, expert guidelines and study materials are also here. Get subscription now on Plus and Iconic. All of you can take any subscription for 36 months, 24 months and 12 months after 10% discount. There is huge discount now, 36 month 22%, 1250 per month. All of you can use my code, that is K10. K10 you can use, you can apply my code and you can take admission here. UPSC Combat also here. In 60 minutes 56 questions are available. 4 crore scholarship programs and now all of you can join every Sunday at 11 a.m. Okay, now all of these test series are also available. Unacademy Chunoti 2.0, Pathfinder 6.0, World Affairs 6.0. Yes, now we are going to discuss Indian economy. What is Indian economy MCQ? Yes, now Indian economy MCQ. Then what is Indian economy MCQ? Let's see. The first question is which of the following statement is are correct? Which of the following statement is are correct about the currency in India? Yes, everybody now join the session. Which of the following statement is are correct? Everyone. Which of the following statement is are correct about the currency in India? It has intrinsic value. First, it has intrinsic value. Second, the total amount of currency in circulation is backed by an equal value of gold by the RBI. And third, anyone who does not accept Indian currency in India is liable for action under the Indian Penal Code. Okay. तो भारत में मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑल ऑफ यू, आपको सभी लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंतरिक मूल्य है। सेकंड, प्रचलन में मुद्रा की कुल मात्रा आरबीआई द्वारा सोने के बराबर मूल्य द्वारा समर्थित है। थर्ड,
जो कोई भी भारतीय मुद्रा स्वीकार नहीं करता है वो भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। बताना है कौन सा इसमें से कूट सही है। फर्स्ट ओनली, वन एंड थर्ड ओनली, वन टू एंड थर्ड ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द करेंसी इन इंडिया? तो बिल्कुल सही है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। एनीवन हु डज नॉट एक्सेप्ट इंडियन करेंसी इज लायबल फॉर एक्शन अंडर द इंडियन पेनल कोड। यानी जो कोई भी भारतीय मुद्रा भारत में स्वीकार नहीं करता है वो भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, जो कोई भी भारतीय मुद्रा भारत में स्वीकार नहीं करता है वह भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। Select the correct answer using the code given below is third. Now the description is here. Description is the rupee is the standard unit of money. The rupee is the standard unit of money in India, but the face value of coins or currency notes is greater today than its real value. It does not have any intrinsic value and it is a type of token money. It is a type of token money. Yes, तो हम जो बेटा मुद्रा का प्रयोग करते हैं वो एक प्रकार की सांकेतिक मुद्रा है एंड टोकन मनी इज मेड ऑफ चीपर मेटल। तो जो हमारी सांकेतिक मुद्रा है वो सस्ती है ना, वो सस्ती धातु से बनी हुई है। इट इज limited legal tender. It is not subject to free coinage and its face value is greater than its intrinsic or metallic value. Token money consists of small coins and under the minimum reserve system, the RBI has to keep a minimum reserve of this 200 crore. You will have to note it this 200 crore comprising of gold coin, gold bullion and foreign currencies under the minimum reserve system. Under the minimum reserve system, the RBI can issue an unlimited amount of currency by keeping the reserve. The minimum reserve is a token of confidence and does not have any practical connection with the amount of new currencies issued by the RBI. Under the minimum reserve system, RBI can issue an unlimited amount of currency by keeping the reserve without blacking the total currency in circulation with the gold of equal value. But RBI follows some principles or rule for issuing new currencies based upon the economic growth and transaction needs of the people. Hence, statement 2 is not correct. According to RBI rules, तो इस बात समझ लीजिए कि RBI के नियमों के अनुसार those who refuse to accept the Indian currency can be liable for action under section 124A sedition of IPC. On September 20, RBI clarified the coin was valid and anyone refusing it was liable to face legal action. Okay, now the second question is everybody now. The second question is the National Strategy for Financial Inclusion of our India 19 to 24 released recently has been prepared by NITI Aayog, Department of Financial Services, Ministry of Finance, RBI, Financial Stability and Development Council, FSDC, Financial Stability and Development Council। तो भारत के लिए वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय रणनीति, ठीक है, भारत के लिए वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय रणनीति 2019 से 2024 हाल ही में जारी की गई है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय के द्वारा, आरबीआई के द्वारा या वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। सभी लोग आंसर लगाइए
और इसका सही आंसर बताइए कि भारत के लिए क्या होगा। सभी लोग आंसर बताएं। तो भारत के लिए वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बहुत ज्यादा ये शब्द चर्चा में रहता है कि वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय रणनीति 2019-24 हाल ही में जारी की गई है। क्या होगा आंसर? सभी लोग आंसर बताइए। यस, आंसर इज आरबीआई। यस, आंसर इज आरबीआई। The National Strategy for Financial Inclusion for India 2019-24 is RBI। तो भारत के लिए वित्तीय समावेशन की रणनीति 2019 से 24 हाल ही में जो जारी की गई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आरबीआई इज द रिस्पॉन्सिबल बॉडी। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बेटा सभी लोग। द नेशनल स्ट्रेटेजी The National Strategy for Financial Inclusion 19 to 24 sets forth the vision and key objectives of the financial inclusion policies in India to help expand and sustain the financial inclusion process at the national level through a broad convergence of action involving all the stakeholders in the financial sectors. The strategy aims to provide access to formal financial services affordability and broadening and deepening financial inclusion and promoting financial literacy and consumer protection. The National Strategy for Financial Inclusion for India 2019 to 2024 has been prepared by RBI and under the aegis of the Financial Inclusion Advisory Committee, and it based on the inputs and suggestions from Government of India, other financial sector regulators, that is Securities Exchange Board of India, it means SEBI, Insurance and Regulatory and Development Authority, it means IRDAI, IRDA, you can say, and Pension Fund Regularity and Development Authority of India, PFRDA. Okay, now the next question is, consider the following statements regarding Bharat interface for money. Consider the following statement regarding Bharat interface for money. Bharat interface for money, it means Bhim. It means Bhim. What is? It means Bhim. Now, all of you can see, it is a payment interface developed. It is a payment interface developed by National Payments Corporation of India (NPCI) to allow real-time fund transfer. This is real-time fund transfer. It allows for the linking of multiple bank accounts and the option of applying an initial public offer. It means IPO. तो भारत इंटरफेस मनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम, भीम के बारे में निम्नलिखित विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित एक भुगतान इंटरफेस है जो वास्तविक समय निधि हस्तांतरण की अनुमति देता है। यह कई बैंक खातों को जोड़ने और आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO में आवेदन करने के विकल्प के लिए अनुमति देता है। Which of the statements given above is and are correct? First only, second only, both first and second, neither, one और two। सभी वहां से बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है।
लगातार भीम चर्चा में रहता है और भीम से लगातार सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी के बारे में आपको सही स्टेटमेंट देना है एवरीवन नाउ। तो बिल्कुल सही आंसर है बेटा। क्या आंसर होगा? दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। It is a payment interface developed by National Payments Corporation of India (NPCI) to allow real-time fund transfer, and it allows for the linking of multiple bank accounts and the option of applying an initial public offer, it means IPO। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी के बारे में दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, बोथ 1 and 2। तो थोड़ा सा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख लें सभी लोग। नाउ स्टेटमेंट 1 इज वाई करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज वाई करेक्ट। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी is a payment interface developed by the National Payments Corporation of India (NPCI). NPCI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) to allow real time fund transfer। Allow real time fund transfer, it is an application that lets you make simple, easy and quick payment transactions using unified payments interface UPI. Ones can make instant bank to bank payments and pay and collect money using just a mobile number or virtual payment address, it means VPA। Statement 2 is also correct। Recently, the government has launched the new version of Bheem, referred to as Bheem 2.0, to make it more feature and effective। Some of the striking features making Bheem 2.0 include a donation gateway, increased transaction limits for high value transactions, linking multiple bank accounts, offers from merchants, the option of applying in IPO, gifting money, also the support of 3 languages। याद रखिएगा 3 भाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं? कोंकणी, भोजपुरी एंड हरियाणवी हैज बीन एडेड। ओके, now next question is, in which of the following cases will the factor cost will be greater than the market price of a product? बहुत अच्छा सवाल है। In which of the following cases will the factor cost will be greater than the market price of a product? The first is when subsidies are less than the indirect taxes. Second one, when subsidies are more than indirect taxes. Third, when the labor cost increase substantially. And fourth is when the cost of marketing and advertisement decreases। तो निम्नलिखित में से किस मामले में कारक लागत किसी उत्पाद के बाजार मूल्य से अधिक होगा? ठीक है, किस मामले में कारक लागत किसी उत्पाद के बाजार मूल्य से अधिक होगा? फर्स्ट इज जब सब्सिडी अप्रत्यक्ष करों से कम है, जब सब्सिडी अप्रत्यक्ष करों से अधिक है, जब श्रम लागत में पर्याप्त वृद्धि हो रही है, जब विपणन और विज्ञापन की लागतें घटती हैं। ऑल ऑफ यू हैव टू आंसर करेक्टली। वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस इज कि निम्नलिखित में से किस मामले में कारक लागत किसी उत्पाद के बाजार मूल्य से अधिक होगा? तो जब सब्सिडी अप्रत्यक्ष करों से कम होगा, जब सब्सिडी अप्रत्यक्ष करों से अधिक होता है, जब श्रम लागत में पर्याप्त वृद्धि होती है,
जब विपणन और विज्ञापन की लागत घटती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द फैक्टर कॉस्ट विल बी, तो बिल्कुल सही आंसर है व्हेन सब्सिडी आर मोर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो दिस इज राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर व्हेन सब्सिडीज आर मोर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी जब सब्सिडी अप्रत्यक्ष करों से अधिक होती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के साथ ही ये क्लास हो रही है। आप जितने अच्छे से क्वेश्चंस को समझेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, उतने अच्छे से आप एग्जाम में कर आएंगे। तो आपको एग्जाम में अच्छे से करना है और बहुत अच्छे से करना है। तो मार्केट प्राइसेस आर दी prices as paid by the consumers. Market prices also include product taxes and subsidies. Okay. So market prices are the prices as paid by the consumers. Market prices also include product taxes and subsidies. Include product taxes and the subsidies. The term factor cost refers to the prices of products as received by the producers. Thus, factor cost is equal to the market price minus net indirect taxes. It means the factor cost is equal to the market price. Yes, factor cost is equal to the market price minus net indirect taxes. Okay, it means net indirect taxes are calculated by the subtracting subsidies from indirect taxes. Yes, net indirect taxes are कैसे, तो net indirect tax कैसे मिलेगा, subtracting subsidies from the indirect taxes. It means factor cost is equal to net indirect taxes are calculated by subtracting subsidies from indirect taxes. Factor cost is equal to market price minus net indirect taxes is equal to market price minus indirect taxes minus subsidies. Okay, market price minus indirect taxes and indirect taxes minus subsidy. When we subtract subsidy from the indirect taxes, then we will get the net indirect taxes. Okay, and the market price is greater than factor cost always. The market price is greater than factor cost always when the net indirect tax is positive. That is, indirect taxes are more than subsidies and market prices are less than the factor cost. When the net indirect taxes is negative, that is, indirect taxes are less than the subsidies. Hence, option B is the correct. An increase or decrease in the cost of production will increase or decrease the factor cost as well as market price in a proportionate amount. The next question is everybody. I hope आप सभी लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे समझने की कोशिश करिए क्योंकि बहुत अच्छे सवाल है। ठीक है, with reference to the recently approved green credit scheme. Okay, with reference to recently approved green credit scheme, consider the following statements. First is, it aims to allow private companies and village forest communities to identify land and grow plantation. And under these schemes, forest can be traded as a commodity under the compensatory afforestation. तो हाल ही में अनुमोदित ग्रीन कार्ड स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हाल ही में अनुमोदित ग्रीन क्रेडिट स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य निजी कंपनियों और ग्रामीण वन समुदायों की भूमि की पहचान करना है और इनका वृक्षारोपण करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, निजी कंपनियों ग्रामीण वन समुदायों को भूमि की पहचान करना है और इनका वृक्षारोपण करना है। और इस योजना के तहत वनों को प्रतिपूरक वनीकरण के तहत एक जिन्स के रूप में कारोबार किया जा सकता है। Which of the statements given above is are correct? First only, second only, both first and second, neither first and nor two. ठीक है, which of the statements given above is are correct? First only, second only, both first and second, neither nor one or two. What will be the right answer? Everybody. Now,
चूज द राइट आंसर। तो हाल ही में अनुमोदित ग्रीन क्रेडिट स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? निजी कंपनियों और ग्रामीण वन समुदायों को भूमि की पहचान करना और वृक्षारोपण करना है। सेकेंड इस योजना के तहत वनों को प्रतिपूरक वनीकरण के तहत एक जिन्स के रूप में कारोबार किया जा सकता है। यस, तो आपका आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इट एम्स टू अलाउ प्राइवेट कंपनीज एंड विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटीज to identify land and grow plantation, and under the scheme forest can be traded as commodity under compensatory forestation, afforestation। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही है। देन सी इज द राइट आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। ध्यान समझिए एक्सप्लेनेशन को। यस, the forest advisory committee The Forest Advisory Committee (FAC) of the Environment Ministry has recently approved a scheme that could allow forests to be traded as a commodity, as it would allow the Forest Department to outsource its responsibility of reforesting. Forest Department to outsource its responsibility to reforesting to non-government agencies. The FAC, it means Forest Advisory Committee. FAC is an apex body tasked with adjudicating requests by the industry to raise forest land for the commercial use. Currently, industries need to find appropriate non-forest land in place of and equal to the forest and that was raised. The country and the industry would also have to pay the state forest department the current economic equivalent of the forest land. It is then the responsibility of the forest department to restore vegetation in the area and which would over time grow into forest. The new scheme approved by the Forest Advisory Committee called the Green Grid Scheme would allow agencies like private companies and village forest communities to identify land and grow plantations. After 3 years, they would be eligible to be considered as compensatory forest. The next question is, consider the following statements. Consider the following statements with reference to the Department of Military Affairs. Yes, with reference to the Department of Military Affairs. It is a department under the Union Home Ministry. It is headed by the Chief of Defense Staff. It is very important question. Yes, it is very important question. सैन्य मामलों के विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैन्य मामलों के विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द फर्स्ट इज, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। एंड सेकेंड इज, इसका नेतृत्व चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस को करना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन above is correct? First only, second only, both 1 and 2, neither 1 or not 2, the 1 or not 2. It's okay? बताइए सभी लोग, everybody put your answer please. सभी लोग आंसर बताइए। Answer is, it is to be read by Chief of Defense Staff. Yes, now you can see here the answer. We consider the following statements with reference to the Department of Military Affairs (DMA). It is to be headed by the Chief of Defense Staff. Very important post this is. Now we are going to discuss the explanation of this question is, the government has created a Department of Military Affairs. The government has created a Department of Military Affairs in the Defense Ministry, and it will be headed by newly appointed Chief of Defense Staff, that is CDS. Hence, only statement 2 is correct. The new department will have under it works relating to the three forces. What are the three forces? Army, Navy, and Air Force. And procurement exclusive to the services, except capital acquisitions according to prevalent rules and procedures
the Department of Military Affairs will have an integrated headquarters of the Defense Ministry comprising of the Army headquarters, the Naval headquarters, the Air headquarters, the Defense Staff headquarters, and the Territorial Army. Territorial Army. Okay. Now, the next question is with reference to Economic Intelligence Council, very, very important. Yes, Economic Intelligence Council, consider the following statements. It's an organ of NITI Aayog. It's an organ of NITI Aayog. It is headed by the Prime Minister. It is mandated to combat the generation and laundering of black money. आर्थिक खुफिया परिषद बहुत चर्चा में रहा है। आर्थिक खुफिया परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति आयोग का एक अंग है, या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में है, या पीढ़ी और काले धन की लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए अनिवार्य है, या पीढ़ी और काले धन की लॉन्ड्री का मुकाबला करने अनिवार्य है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? द फर्स्ट इज 3 only, 2 and 3 only, 1 and 2nd, and 1, 2 and 3. Now the answer is everybody. तो आंसर इज बिल्कुल तीसरा आंसर बिल्कुल सही है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट इज मैंडेटेड टू कॉम्बैट जनरेशन एंड लॉन्ड्रिंग ऑफ ब्लैक मनी, यानी या पीढ़ी और काले धन की लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो जो बच्चे सेशन को देख रहे हो वो प्लीज सेशन को लाइक कर दें और सेशन को एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिए, बिकॉज दिस इज इंडियन इकोनॉमी मैराथन एमसीक्यूज। यहाँ पर आप भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस को देख रहे हैं। यस, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं पहले एक बार। आपको एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, विदाउट एक्सप्लेनेशन तो बहुत मुश्किल है। बिकॉज ऑफ लिंक इज बीइंग डेवलप्ड, जस्ट अ सेकंड। Yes, because of linkage being developed in recent times between economic offenses and threats to national security, the government constituted Economic Intelligence Council (EIC) under the chairmanship of the Finance Minister in the year of 1990 to facilitate coordination amongst the enforcement agencies dealing with economic offenses. The council is also the apex of 30 regional economic intelligence committees and is part of the Union Ministry of Finance. The mandate of the EIC is to combat generation and laundering of black money through intelligence gathering on issues relating to economic security, provide interagency coordination, and deal with economic offense effectively. Hence, statement 3 is also correct. Hence, option is the correct is also because of the newer forms of the continuously emerging complex economic crimes. Yes, this is very most important term is emerging complex economic crime, that is emerging complex economic crimes. The government has put in place institutional structure and mechanism for coordinated intelligence sharing and investigation at the regional level in the form of 30 General Economic Intelligence Council REICs and the REIC forum consists of officers from CBDT, Central Board of Direct Tax, CBIC, Central Board of Indirects, and heads of the other related agencies, both from central and state governments. REICs have together economic intelligence on trade, industry, and region and examine trends and modus operandi and suggest measures of demanding effectively against economic offenders. Now next question is,
The next question is, recently the Bureau of Indian Standards, BIS, Bureau of Indian Standards made it mandatory for all jewelers to sell BIS hallmark jewelry. In this context, which of the following marks should be hallmarked on gold jewelry to prove its authenticity? It means BIS mark, purity in carat, hallmarking centers identification mark, year of ज्वेलरी मेकिंग। ठीक है, ईयर ऑफ ज्वेलरी मेकिंग। तो हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने सभी ज्वेलर्स के लिए बीआईएस हॉलमार्क वाले गहने बेचना अनिवार्य कर दिया था, है कि नहीं? अनिवार्य कर दिया था। इस संदर्भ में इसकी प्रामाणिकता को साबित करने के लिए सोने के गहनों पर निम्नलिखित में से कौन सा निशान होना चाहिए? कौन सा निशान होना चाहिए, बताइए। कैरेट में शुद्धता, हॉलमार्किंग सेंटर की पहचान मार्क, या आभूषण बनाने का वर्ष? चलिए आंसर दीजिए एवरीवन। वह 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो बीआईएस मार्क भी होना चाहिए, प्योरिटी इन कैरेट भी होना चाहिए, और हॉलमार्क सेंटर्स आइडेंटिफिकेशन मार्क भी होना चाहिए। नाउ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। It has now become mandatory for all jewelers to sell hallmark gold jewelry, and hallmarking is the accurate determination and official recording of the proportionate content of the precious metal. Gold hallmarking is a purity certification of the precious metal. In India, at present, gold and silver have been brought under the purview of hallmarking. Hallmarking will be done for jewelry in 3 categories: 14 कैरेट्स, 18 कैरेट एंड 22 कैरेट। ठीक है, तो हॉलमार्किंग को 3 कैटेगरी में किया गया है: 14 कैरेट्स, 18 कैरेट्स एंड 22 कैरेट्स। हॉलमार्क ऑन गोल्ड ज्वेलरी नाउ हैज 4 मार्क्स। 4 मार्क्स कौन कौन से मार्क्स है बेटा? तो पहला है, देखिए ध्यान से, प्योरिटी इन कैरेट एंड फिटनेस 22K916 corresponding to 22 carat, 18K750 corresponding to 18 carat, 14K585 corresponding to 14 carat. Assign hallmarking centers identification mark number, jewelers identification mark number before. Yes. Next question. Question number 9. In the context of Indian banking, e-Kuber refers to a single window mechanism provided by Reserve Bank of India for granting license to small finance banks, an online portal for disbursing loans related to Pradhan Mantri Mudra Yojana, the core banking solution of Reserve Bank of India, an online platform for trading and mobilizing idly lying gold। इडली लाइन गोल्ड है ना। तो भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में ई कुबेर का उल्लेख है। तो ई कुबेर का क्या उल्लेख है? पहला, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस देने के लिए एकल खिड़की तंत्र प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित ऋणों के वितरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की तैयारी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य बैंकिंग समाधान है। और व्यापार और बेकार पड़े सोने को जुटाने के लिए एक ऑनलाइन मंच भी तैयार करना। तो आंसर इज क्या होगा? आंसर इज सी। In the context of Indian banking, e-Kuber refers to a single window mechanism provided by Reserve Bank of India, granting license to small finance banks and an online portal for the core banking solution. This is the one of the best, I think, answer. The core banking solution of Reserve Bank of India. तो रिजर्व बैंक का मुख्य बैंकिंग समाधान। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बेटा। एक्सप्लेनेशन देखिए।
E-Kuber is the core banking solution of the Reserve Banking of India. It provides the provision of a single current account for each bank across the country, with decentralized access to this account from anywhere, anytime, safely using portal-based services. C is the correct answer. It enables ease of operation. The system also benefits state central governments as users. Some of the facilities offered include the provision of portal-based access, which allows government departments to access on the anywhere, anytime basis on the view their balances of all types, including the ways and means advances, drawings, funds positions, and the like, all in a consolidated manner to help them in better funds management. The capability of consolidating revenue collections by banks through the e-Kuber offer the potential for better flexibility for the governments in managing its finance, apart from moving over towards higher level of electronic banking. Now, the last but not the least, consider the following statements regarding currency regulation in India. The Reserve Bank of India Act 1934 vests the RBI with responsibility of currency management and coinage, and the Reserve Bank of India is responsible for printing and regulating the denomination of currency notes to be calculated. तो भारत में मुद्रा विनिमय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रा प्रबंधन और सिक्के की जिम्मेदारी देता है। भारतीय रिजर्व बैंक सर्कुलेट किए जाने वाले करेंसी नोटों के मूल्य के मुद्रण और विनिमय के लिए जिम्मेदार है। Which of the statements given above is correct? One only, two only, both one and two, and neither one are not two. Consider the following statements regarding currency regulation in India. And the Reserve Bank of India Act 1934 vests the RBI with the responsibility to currency management and coinage. And the Reserve Bank of India is responsible for printing and regulating the denomination. क्या आंसर होगा? तो बिल्कुल दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, हाँ, दोनों, डी इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट। One is not correct. The printing and circulation of currency notes are regulated by the Reserve Bank of India Act 1934. As per the Act, the Reserve Bank manages currency in India. The responsibility for coinage vests with the Government of India based on the Coinage Act 2011 as amended from time to time. Statement 2 is also not correct. The Reserve Bank of India is responsible for printing the currency notes as per the Reserve Bank of India Act 1934. However, the denomination of the currency decided by the central government. The government, on the advice of the Reserve Bank, decides on various denomination of banknotes to be issued. The Reserve Bank can also issue banknote in the denomination of 5,000 rupees and 10,000 rupees or any other denomination that the central government may specify. However, there cannot be banknotes in denominations higher than 10,000 rupees in terms of the current provisions of the Reserve Bank of India Act 1934. Okay, तो 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए बेटा, है ना। एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस सेशंस। तो इस तरीके से हम लोग इकोनॉमी के क्वेश्चंस लाते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट। आप एवरी थर्सडे हमसे जुड़ सकते हैं। एवरी थर्सडे को आप यहाँ पर आइए, ठीक है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि आप अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया एंड आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। यूपीएससी सीएससी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेट्स क्रैक इट के प्लेटफॉर्म पर आप हैं।
बहुत सारे एजुकेटर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पर 6-in-1 ऑफर वो अवेल भी कर सकते हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस सेशन वेरी वेल। आप 4 कोर्स की स्कॉलरशिप के लिए कोड अप्लाई कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन के लिए भी मेरा कोड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। Yes, K10, and this is Kumar Mayank. This is Kumar Mayank. Now, thank you so much. Thank you.